Hi students, how are you all doing? A very good afternoon to all of you and I welcome you on English to English once again. Now today on High Demand, I am presenting you with tenses. आपने जैसा कि बोला था कि tenses एक टॉपिक है जो काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है सॉल्व करने में. So आज का टॉपिक क्या होगा? Tenses. Now I want you to know that what is tenses. If I want that you need to define, if I ask you, you need to define tenses in one word. Can you define that? अगर हम बोले आपको ये डिफाइन करना है कि टेंसेस सिर्फ एक शब्द में डिफाइन कर दो तो क्या आप कर पाएंगे? टेंसेस क्या होते हैं? Why are these used? Quickly. एक शब्द में टेंसेस क्या होते हैं? बस इतना बताना है आपको. Now, क्या होता है? Quickly. क्यों यूज किया जाता है या फिर क्या होता है? I want to know this thing. Okay. हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून. आप बताइए टेंसेस क्या होते हैं? क्विकली एक वर्ड में आपको टेंसेस को डिफाइन करना है. वेरी गुड. आशीष कुमार हैज आंसर दैट इज इट्स टाइम. श्रीजन हैज आंसर दैट इट्स अ रिलेशन विद टाइम. ओके, टाइम रिलेशन और टाइम. इफ आई से टेंसेस इज टाइम, दैट वुड बी करेक्ट. बट इफ आई आस्क यू व्हाट relation it associates with time, if we are connecting it with time, अगर हम time के साथ इसको connect कर रहे हैं तो what is the relation? Okay, आलोक, अनिल, अनु, राहुल, अनुज, you all have answers correctly that this is time. Tenses is time, but tenses defines the time of verb. Tenses use क्यों किए जाते हैं? If I give you one word which is, suppose if I give you do, this is one form of word. You can use do as did also. You can use it as does also. You can use it as doing also. And you can use this at done also. So आप एक ही word को कई तरह से use कर सकते हैं. एक ही verb को कई तरह से use कर सकते हैं. You can form different verbs through it. So what is tenses? It defines the time of a verb. And what kind of verb will be used? That is the form of verb. So altogether, what do we have? We have 5 forms of verb. तो अगर हम ये define कर रहे हैं तो हम एक verb को कितने types से define कर सकते हैं, कितने forms से define कर सकते हैं? हम उसके 5 forms define कर सकते हैं. And these forms help you to find a tense. और यही forms होते हैं जो tense में आपकी help करते हैं. So let's have a look at the forms first. Forms of verb. अगर हम सबसे पहले forms of verb को ही discuss करें तो सबसे पहला form कौन सा होता है? या फिर I want to ask you one thing. How many forms are there? How many forms of verbs are there? कितने forms of verbs होते हैं? Okay, Shah, you've answered future, present, past. That is not forms of verb. That is types of tenses. ठीक है, quickly. Okay, Farooq has said that verb की forms change हो जाती हैं according to time. That is correct. Now I want you to answer how many forms of verbs are there. कितने forms होते हैं? I'm not be particular that I'm not talking about the types. I'm talking about the form of verb which tells time or state of action. That is correct. Okay, Sunita has answered. Tanmay and Ajit, you people have said there are 3 forms. Okay, Ashwini said 4 forms. So according to you people, we have V1, V2, V3. Verbs first form, verbs second form and verbs third form. And Vishal, Prabhu, Manoj, Sandeep, Anil, Farooq, again 3 mainly, okay. Okay, those who are saying 5, some of you are saying 5 also, and someone said, okay, Manoj, you said 6, right? 9 forms, I've never seen 9 forms in my life. I want you to define that if you know them. 1, 2, 3, these are the main 3 forms. But apart from this, we also have V4 and V5. But in the books, you'll never use it as V4 or V5. आपको books में कभी भी ये V4 और V5 के नाम से नहीं मिलेगा. किस नाम से मिलेगा? V4 will always be in ing form and V5 will always be in S or ES form. Now let's discuss why are these forms used? या फिर इन forms को हम कैसे use करेंगे? In what tense are they used? Okay, okay. 4. Shivas has answered that 4 are there. Mainly we have 3. Then we have verbs 4th form and 5th. 4th is ing and 5th is S or ES form. So let's discuss this.
Okay. So the verb's first form is used in what tense? It is used in present tense. Fine. Then verb's second form is in past tense. Verb's third form is in past participle. Then fourth form is always used in what tense? Continuous tense. And verb's fifth form is also used in present tense. And I would say verb fifth form is also used in, first form is also used in future tense. वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वो प्रेजेंट में भी यूज़ होता है, फ्यूचर में भी यूज़ होता है, लेकिन वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म है वो हमेशा किस में यूज़ होगा? Present tense में. Now what is the difference when we have present tense in V1, we have present tense in V5 also. Now what is the difference between V1 and V5? अगर ये दोनों ही V1 में भी, present tense को हम V1 में भी यूज़ करते हैं, V5 में भी यूज़ करते हैं, तो क्या डिफरेंस होगा? The difference is if I say he dash. Now here you have to use go with this, okay? And if I say they dash, what will you write? अगर हम ही लिख रहे हैं और ही के साथ आपको गो का कोई फॉर्म यूज करना है और हम दे लिख रहे हैं, दे के साथ आपको कोई गो का फॉर्म यूज करना है, तो आप क्या यूज करोगे? दैट इज वेरी मच ऑब्वियस दैट गोज विल बी यूज्ड विथ ही एंड go will be used with they. So what is the difference? The difference is only about the numbers. Difference किस चीज का है? Numbers का difference है. जब हमारे पास present tense में s और es फॉर्म होगा, उस कंडीशन में मतलब हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? जब हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है देन वी यूज द वर्ब्स फिफ्थ फॉर्म, और जब हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है देन वी यूज द वर्ब विदाउट एस और ई एस इन प्रेजेंट टेंस which is used with plural subject. Fine. So this was the difference. So if we talk about the do sentences again, जो हमने do का example लिया था, उसको हम अगर एक बार और discuss करते हैं, तो tell me, verbs first form will be what? Do. And if we talk about the fifth form, it is does. If we talk about the second or past tense, it is did. And what is the past participle? Past participle is always when you use has, have, had or will have or shall have with it. Right? So it is done for do and continuous is doing. So if we talk about the go sentences, it says go, went, gone, going or goes. Fine. So this was the sentence. This was the forms of verb अगर हम use करते. Okay, Vinod has answered correctly. We use does. Okay. Keshav, Rupak, Shalini, Manoj, you all have answered correctly. That this is the use or this is the forms of verb. This is not type. This is the forms of verb which helps you in defining the time of a verb. किसी भी वर्ब के टाइम को डिफाइन करने के लिए जो शब्द आपको मदद करते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब. अब आइए डिस्कस करते हैं कि टेंसेस के कितने टाइप्स हैं या फिर टेंसेस कहाँ यूज होते हैं. सो इफ वी टॉक अबाउट टेंसेस, व्हाट आर दीज? आई टोल्ड यू इट इज अ टाइम दैट टेल्स यू समथिंग अबाउट द वर्ब. ये टाइम है जो आपको किसके बारे में बताता है? वर्ब के बारे में बताता है कि वर्ब कहाँ यूज हुआ है या फिर काम हो चुका है, होना है या फिर चल रहा है. The work is already completed, it is going on or it will be going on. So this is what defines tenses. So according to time, we have three types of tenses. First is present, second is past, and the third is future. If we say that tense is the time of the verb, so according to time we can divide it in three parts. तो क्या बोला हमने? अगर हम बोलते हैं कि टेंस को टाइम है और टाइम किस चीज़ का है? वर्ब का है. तो टाइम के अकॉर्डिंग हम तीन पार्ट्स में टेंस को डिफाइन कर सकते हैं. फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस. व्हाट इज प्रेजेंट? Whatever is happening in the present. Okay. What is past tense? Whatever has already been completed, that comes under past tense. And what is future? Anything which is yet to be done, जो अभी होना बाकी है, उसको आप किस में लिखोगे? फ्यूचर टेंस में. Now we have further divided these three tenses into four parts. अब हमने इन्हीं तीन tenses को चार और parts में divide कर दिया है. And what are these four parts? It will be simple or indefinite. दोनों में से कोई एक नाम मिलेगा. Either simple will be written or indefinite. Fine. Next is
continuous tense. Next is perfect, and the last is perfect continuous. So we have these 4 parts for each of the tenses. Similarly, if we talk about present, we have simple present, present continuous, present perfect continuous. So we have 4 parts for each tenses. Now what does simple or indefinite tense define? अगर हम simple और indefinite tense की बात करते हैं तो वो क्या define करता है? सबसे पहली चीज क्या define करता है? यहाँ पे certainty is not there. When is the work performed? You're not sure about the time. In that condition, you use simple or indefinite tense. When is continuous tense used? Continuous tense is always used when something is going on. If it is related to present, it is done in the present. It's going on in the present. If something is done in past, it was going on, and if something is there in future, it will be going on. Fine. If we talk about perfect, something has just completed or completed within a given time. जब कुछ given time के साथ कोई चीज़ complete हो जाती है तब हम किसका use करते हैं? Perfect का. And last is perfect continuous, which defines something was started in the past, still continued or will be continued. पास या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब निकलता है? जब कोई चीज़ पास से चली आ रही है, अभी भी चल रही है और फ्यूचर में भी चलती रहेगी. ठीक है, तो अगर हम ऐसे कुछ डिफाइन करते हैं तो वी हैव 4 पार्ट्स. नाउ लेट्स डिस्कस प्रेजेंट टेंस फर्स्ट. Now in the meanwhile I want you to answer where is simple indefinite used or simple present used. Quickly, सबसे पहला टेंस जो हम डिस्कस करेंगे that is present tense, and the first part of present tense is simple present, or you can call it present indefinite. Simple present बोले या present indefinite बोले, दोनों एक ही tense है. If I want you to answer what is the structure of the sentence, अगर हम ये पूछे कि कौन सा sentence में कौन सा verb use होगा या फिर sentence का structure क्या होगा, so the first thing will be you will place a subject, then either verb's first form will be used or verb's fifth form will be used plus your object. So this is the sentence structure of simple present. Okay, तो ये क्या है sentence structure? Okay, Bikash has answered that universal truth will be used. Meena has answered, Bhargavi, Manoj, okay. Avan has answered, Tanu has answered that daily routine will be under it. Very good. Rohit Kumar has answered that universal truth will be there. So you answered that whenever we have a universal truth given in a sentence, it will follow what? Simple present tense. Why? Because this can never change, and something which can never change always follows simple present. आप लोग ने बोला कि यूनिवर्सल ट्रूथ में हम क्या रखेंगे? सिंपल प्रेजेंट रखेंगे. क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं चेंज हो सकती, और जो कभी नहीं चेंज होगी वो हमेशा ही ऐसे चलती आएगी, ऑलवेज एक ही तरह से चलेगी. उस कंडीशन को हम किस में रखेंगे? सिंपल प्रेजेंट में. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गिव यू दिस सेंटेंस, मैन needs air and water to live. Now tell me, will this sentence be correct? Is this sentence correct? Man needs air and water to live. Is it correct or wrong? Quickly. Okay, Rupak Savale has answered subject, verb, form, object. Verb's form will be either V1 or V5. You cannot use any other verb form apart from V1 or V5 in simple present. Quickly. Okay, habitual sentences will be there. Sun rises in the east. That's a very old example. Sun rises in the east, but that's correct. Sun rises in the east. Sun का जो location है rise करने का वो कभी change नहीं हो सकता. That's a universal truth. That is why we use the word rises, which is verb's fifth form. I go to Delhi tomorrow. No, that is incorrect. I am going to Delhi tomorrow. That would be correct. वो future है लेकिन वो near future है, इसलिए आप उसको present continuous में रख सकते हो, लेकिन simple present में नहीं लाओगे. Quickly. Okay, Messi, Rahul, Tanu, Meena, Farooq. Okay, it's correct. It's rightly. That's incorrect. It's rightly. There's no word like rightly.
Suraj, Amit, Viresh, you all have answered correctly that this sentence is correct. Why? Because this is a universal truth. A man cannot live without air and water. So this is the subject that you have, and you have the verb as verb's fifth form. Fine. Why? Because the subject was singular. Subject singular है, इसकी वजह से verb का fifth form लगा है present tense में, और जो आपका object है वो क्या है? Air and water. Fine. So whenever we have something that is considered under universal truth, we'll always follow simple present with it. Now the second thing that you people told me, दूसरी चीज जो आप ही ने हमें बताई है वो क्या है? Any habitual action. Now what does this mean? Habitual action. Habitual action का मतलब क्या होता है? Anything which is performed daily, per day, on a regular basis. ऐसी कोई भी चीज जो रोज होती है, हर रोज आप नियम से करते हैं, on a routine. So in that case you use what? Simple present tense. For example, if I say कि आप रोज क्या करते हैं? Okay, I got one more answer. अब्दुल जमील ने आंसर किया है न्यूज़पेपर हेडलाइंस में भी यूज होता है. That is correct. I am wake up. Whenever you use the word am, you cannot use verb's first form with it. Am के साथ हमेशा आप ing लगाएंगे, ठीक है? I am wake up early in the morning. Okay. Quickly. I go to school every day. Shrijan Hazra has answered correctly. I go to school every day. You made a mistake कि every day जो लोग साथ में लिखते हैं that is incorrect. Every अलग लिखा जाता है और day अलग लिखा जाता है, ठीक है? That's a grammatical error. आप every अलग लिखोगे और day को अलग लिखोगे. That's not a single word. Now tell me, I go to school every day. That is correct. Why? Because you have a word every day, which means कि आप daily की कोई बात कर रहे हैं. So according to this, you have used verb's first form, and all of you know that whenever we place I always follows plural verbs with it. आपको ये पता होगा कि I हमेशा अपने साथ am के अलावा plural verb लगाता है, इस वजह से यहाँ पे क्या यूज हुआ है? Go, जो कि verb का first form है. So whenever we have anything in routine, in that case we use what? Simple present or present indefinite, whatever you call it, right? Now, इसके अलावा हम इसको कहाँ use कर सकते हैं? Quickly. Apart from universal truth and habitual action, where can we use these? अच्छा, एक आंसर आया था that we can use it with what? Newspaper headlines के साथ हम इसको use कर सकते हैं, है ना? एक और आंसर था newspaper headlines. And I want to associate one more thing with it. If we have anything in commentary, then in that case also we use what? क्या यूज करते हैं हम इसके साथ? इसके साथ भी हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं. नाउ व्हाई इज इट यूज्ड? न्यूज़पेपर हेडलाइन या कमेंट्री के साथ क्यों यूज होता है? नो मैटर द वर्क परफॉर्म्ड, या फिर जो भी न्यूज आई है वो कब आई हो, इट मस्ट हैव बीन रिलीज्ड येस्टरडे और द वर्क मस्ट हैव डन येस्टरडे, मतलब पास्ट हो चुका है. बट अकॉर्डिंग टू द न्यूज़पेपर इट इज डिलीवर्ड टू यू ऑन दैट पर्टिकुलर डे. न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग वो उस दिन आपको पहली बार उसके थ्रू क्या कर रहा है? इन्फॉर्म कर रहा है. तो इन दैट केस यू यूज द वर्ड सिंपल प्रेजेंट. क्यों यूज करते हैं? यही रीजन है कि भले वो काम कल हो चुका है, पास्ट में हो चुका है, लेकिन न्यूज़पेपर के द्वारा वो आपको फर्स्ट टाइम बताया जा रहा है. एंड दैट इज द रीजन वी यूज न्यूज़पेपर हेडलाइंस. और कॉमेंट्री के साथ हम क्या यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट. नाउ लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. द रूलिंग party take an oath on Sunday. Now can you tell me, is it correct or incorrect? Quickly. क्या ये sentence correct है? The ruling party take an oath on Sunday. क्या ये correct है? We can use continuous in commentary, but sir commentary के साथ हम continuous use करते हैं, but it is very much appropriate. अच्छा ठीक है. Suppose विराट कोहली ने एक 6 strike किया. When the commentator tells you about this, what does he say? He says विराट कोहली strikes a 6. तो वो striking क्यों नहीं बोलता है? वो strikes बोलता है. Why? Because उसके थ्रू वो आपको, भले वो strike कर चुका है, लेकिन उसके थ्रू तो पहली बार बताई जा रही है ना, इस वजह से हम उसके साथ simple present यूज करते हैं. आप continuous बोल रहे हो, but we can, अगर हम बोलते हैं is विराट कोहली is striking a 6, that means that थिंग इज स्टिल इन प्रोसेस. वो चीज़ अभी भी प्रोसेस में है,
लेकिन आप कैसे डिसाइड कर सकते हो अगर वो स्टिल प्रोसेस में है? सपोज वो एंड होते होते अगर वो कैच हो जाए तो दैट वुड बी इनकरेक्ट, राइट? तो वो कंप्लीट होने के बाद भी हम कॉमेंट्री में क्या यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं. नाउ टेल मी, इज दिस सेंटेंस करेक्ट? ओके, Ajit has said, okay, you all have said that it's wrong. Very good. It should be okay. Answers भी आ गए हैं. Took आएगा, took will be wrong. Took नहीं आ सकता. Very good. Ashish, Deepak, Umesh, Avan, Ashwini, Sunita, ABD, Umesh, and Pankaj, Manoj. You all have answered correctly that we will not use take with it. Rather, we'll use the word takes, which is correct. Why? Because this thing is in what? In newspaper headlines, right? Next is, we were talking about commentary and I told you Virat strikes a 6 and takes the ball out of the stadium. Now, tell me, Virat has already struck the 6, but here we have used strikes and here we have used takes. Why have we used it? Because these are the words of a commentator. And whenever we give a commentary, we always use simple present with it. Fine? So this was the correct sentence. Okay, Vikas, Viresh, you all have answered correctly that हम क्या use करेंगे? Takes का use करेंगे. यहाँ पे हमने strikes use किया, that is correct. यहाँ हमने takes use किया, that is correct. Now let's move on to the next rule. Now, can you tell me any sentence which starts with here or there and it uses an exclamation mark? ऐसा sentence जो exclamatory mark के साथ here or there को use किया करता हो. Quickly. Exclamatory sentences beginning with what? Here or there. Here या there के साथ start होंगे और होंगे कौन से? Exclamatory sentences. A sentence which starts with here and there and it has what? It has a exclamation mark with it. Quickly. कैसे करेंगे हम? ओके, कभी ऐसा आंसर किया, ये देखो ये चले आ रहे हैं, ऐसा देखा है हमने? कभी सेंटेंस बोला है ना, ये देखो यहाँ से कौन जा रहा है, या किसी को हम ऐसे पॉइंट आउट करके बोलते हैं. सो वेन एवर वी पॉइंट आउट, ये देखो, ये जो सेंटेंस हम यूज करते हैं, और वी यूज दिस वर्ड ये देखो, it can be termed as here or there in the sentence. For example, here comes the most beautiful girl in this college. ये बोला होगा अपनी लाइफ में, कभी कॉलेज में गए होगे तो, बंक ना किया होगा तो, है ना, बोला होगा ना. तो here आप you are starting the sentence with here and you are using verbs fifth form here. Why have you used it? क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, you are exclamating someone. जब आप किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं and you are starting a sentence with here, then you use verbs fifth form or verbs first form to form simple present out of it. Or if I say, there goes the most eligible bachelor of the college. So लड़कियों को disheartened feel नहीं हो, लड़कियों के लिए भी एक sentence है, ठीक है. There goes the most eligible bachelor of the college. So here हम क्या कर रहे हैं, here also we are pointing one person. So whenever we have to point out one person and we need to start the sentence with here and there, in that case we use verbs fifth form which forms a simple present tense. Fine. Now let's move on to the next sentence. Now if I write one sentence, the movie releases on 28th of November.
टेल मी दिस सेंटेंस इज करेक्ट और इनकरेक्ट क्विकली. ये अभी हुआ नहीं है, ये काम हुआ नहीं है, 28 नवंबर को होगा, फ्यूचर की बात कर रहा है, बट स्टिल वी हैव यूज्ड वर्ब्स फिफ्थ फॉर्म हियर. तो ये सेंटेंस करेक्ट है या नहीं है, क्विकली. ओके विकास, हियर कम्स द लकी नंबर 7, योर सेंटेंस इज करेक्ट बिकॉज यू. अच्छा, लेकिन एक देयर इज वन एरर इन दिस सेंटेंस दैट यू नीड टू प्लेस एन एक्सक्लेमेशन मार्क. एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है आपको इस सेंटेंस के लास्ट में. Okay, Kumar, you have said, there she comes. That is also correct. The sentence starts with there and you are pointing out a girl. ठीक है. Here comes the pains. I suppose ये आपके WWE या Raw का कुछ है. Here comes the pains. ऐसा कुछ हमने भी सुना था. Okay, correct. You all are saying that this sentence is correct. Someone said that this sentence is wrong. Okay, Umesh has said that this sentence is wrong. How come this sentence is wrong? हो सकता है कि ये सेंटेंस रॉन्ग हो. क्यों? क्योंकि ये काम अभी हुआ तो है नहीं. दिस वर्क इज नॉट कंप्लीटेड येट एंड दिस हैज टू बी डन इन द फ्यूचर व्हेन 28th of November. और ये काम अभी होना बाकी है. स्टिल वी हैव यूज्ड व्हाट वर्ब्स फिफ्थ फॉर्म हियर एंड दिस सेंटेंस इज करेक्ट. नाउ यू ऑल आर करेक्ट. जिन्होंने भी बोला है दैट दिस सेंटेंस करेक्ट, दैट इज करेक्ट. क्यों है ये सेंटेंस करेक्ट? नाउ लेट मी टेल यू. आई सपोज दिस इज द फिफ्थ रूल. The movie releases on 28th of November, which means when we have a planned action in future. Whenever we have a verb that needs to be performed in the future, but we have a perfect date for it. जब हमारे पास क्या है, एक एक्शन तो है जो फ्यूचर में परफॉर्म होना है, लेकिन हमारे पास एक प्लान्ड एक्शन है. That means we have a perfect date for it. In that condition, we can use simple present tense with it. For example, if I say, हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे क्रिसमस पे, तो बताओ इस सेंटेंस को हम कैसे लिखेंगे? I will celebrate my birthday on Christmas. We can either write it like this or I celebrate my birthday on Christmas. Will this sentence be incorrect if I say this? ये भी सेंटेंस करेक्ट होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक्शन है जो परफॉर्म होना है, सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे, बट दैट टू हैव अ प्लान्ड एक्शन. उसमें भी हमारे पास क्या है, एक प्लान्ड इवेंट है. क्विक, वेरी गुड केशव. प्लान्ड इवेंट है कि हमारे पास सेलिब्रेट करना है और एक परफेक्ट डेट मेंशन है, दैट इज क्रिसमस. क्रिसमस 25th को ही आता है. सो वेन एवर वी हैव समथिंग विच इज टू बी परफॉर्म्ड इन द फ्यूचर बट हैज अ प्लान्ड और परफेक्ट डेट विद इट, इन दैट केस वी यूज सिंपल प्रेजेंट विद इट. फाइन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस. Now the next rule that we have is, it says when the main verb is in future tense. In conditional sentences, we use what? Present indefinite. After it. क्या कह रहा है, जब भी हमारे पास सेंटेंस दिया होगा, whenever we have a sentence whose main verb is in future tense, but the conditional sentence associated with it will follow a verb in present indefinite or simple present tense. अगर कोई ऐसा सेंटेंस आता है जिसका मेन वर्ब फ्यूचर टेंस में हुआ, ठीक है, लेकिन उसमें एक कंडीशनल सेंटेंस भी जुड़ा हुआ है और कंडीशनल सेंटेंस में जो वर्ब आएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए. नाउ हाउ विल यू आइडेंटिफाई अ कंडीशनल सेंटेंस? आप कंडीशनल सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आई विल टेल यू सर्टेन कीवर्ड्स जिनके थ्रू आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये सेंटेंसेस कौन से होते हैं, कंडीशनल होते हैं. ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट कंडीशनल सेंटेंसेस, इट माइट होल्ड व्हेन, unless, until, even if, in case, before,
or as soon as. Now, if you have any of these words given in a sentence, in that case, you will use present indefinite after this words. अगर किसी सेंटेंस में आपको ऐसा वर्ड दिखाई देता है, तो इनके बाद जो वर्ब यूज होगा वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई विल कम बैक फ्रॉम the USA, I will give you a gift. Now, the main verb is, we have two sentences in this sentence. ठीक है, हमारे इस sentence में ही दो sentences है. कौन से? I'll come back from the USA, and the second is I'll give you a gift. दो sentences हैं. Now, the main verb is I will give you a gift. That means the main verb is in what tense? Future tense, right? But if we talk about here, we have a word when mentioned, and I told you when we have when, the verb used after it should be in present indefinite. इसके बाद जो verb use होगा वो present indefinite में होना चाहिए. तो क्या होगा? When I come back from the USA, I will give you a gift. That is the correct sentence. If I write one more sentence, I will not write a letter unless I get a new pen. Now, again you have two sentences. I will not write a letter, and second is I get a new pen. The main verb is in future tense. I will not write. So this is what? This is future tense. And then you have unless word in the sentence, and you have the verb's first form, which is correct. So what do we do whenever we have main verb as future tense and you have any of these words in the sentence which makes a conditional sentence? In that sentence, you will use verb's first form or fifth form in the सेंटेंस. ठीक है. तो क्या कह रहे हैं? अगर कोई ऐसा सेंटेंस आता है जिसका मेन वर्ब फ्यूचर टेंस में हुआ, तो क्या होगा? अगर उसके बाद इनमें से कोई भी एक वर्ड दिया है, तो इनके बाद यूज होने वाला वर्ब किस में होगा? सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो भी आप उसको बोले, उसमें यूज किया जाएगा. जैसे कि हमने यहाँ पे विल कम की जगह कम किया और यहाँ पे गेट का यूज किया. ठीक है. सो बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस रूल. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल नाउ. Now I want you to answer, can we use two future tense in a sentence? क्या हम एक ही sentence में दो future tense use कर सकते हैं? Quickly. एक ही sentence में क्या दो future tenses का use किया जा सकता है? Can they be used? Quickly. I want you to answer this sentence. Okay. Correct. Okay, that sentence was correct. Come or comes will be used. Okay, the sentence was I will. When we use I, we cannot use comes with it, because when we use I, what we use is have with it, right? So I के साथ कभी भी singular verb नहीं लगता है. Either we can place am with it or we use plural verbs with it. So comes cannot be there. I will come. ठीक है? Or I come would be correct. Now I want you to answer. Okay. Yes, someone said yes. Some of you are saying no. Yes, we can use two future tense in a sentence. No, that is incorrect. Never. Okay. Sabyasachi has said we cannot use it. Hanuman, Ashish, Ketan, Pankaj, you all have said that we cannot use it. Very good. We will never use what? We will never use two future tense in a single sentence. आप कभी भी एक सेंटेंस में दो फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करोगे. आप ये ब्लंडर मिस्टेक कभी नहीं कर सकते. क्या ये ब्लंडर मिस्टेक वर्ड सही है? क्विकली, हम ये वर्ड यूज करते हैं. ब्लंडर मिस्टेक हो गई है हमसे. क्विकली, ये करेक्ट है? अगर हम पूछे ब्लंडर मिस्टेक हो गई है हमसे, अगर हम ऐसा काम करते हैं तो ये ब्लंडर मिस्टेक हो गई है. Can we use this word? We use it in general sense.
Okay, some of you have answered no, we cannot use it. That is correct, we cannot use it. Blunder का मतलब भी गलती होता है, mistake का मतलब भी गलती होता है, दो बार गलती एक साथ नहीं करोगे. तो you can either use blunder or mistake. What we can say, we have made a blunder here. अगर हम ऐसा करते हैं sentence में, so we have either made a blunder or we have made a mistake. Fine? Anyway, now let's move on with this only. एक sentence में दो future tense नहीं use हो सकते. For example, if I say, I will complete my work when you, or rather, let's remove when from here, because you have already learnt one rule that whenever we place when, you cannot use future tense with it. So let's place a comma here. I will complete my work, you will come to my place. Now tell me, will this sentence be correct? Okay, Rohit, Vikash has said that it's a superfluous use. That is correct. Either blunder or mistake. ठीक है, दोनों में से हम किसी एक का यूज़ करेंगे, या तो blunder का यूज़ करेंगे या फिर mistake का यूज़ करेंगे. That is correct. Blunder का मतलब ही mistake होता है. आरुषि ने ये चीज़ बोली है. That is correct. अब बताओ, I will complete my work. You will come to my place. Now this is one single sentence. ये एक sentence है और हमने क्या किया है? Will complete भी दे दिया, will come भी दे दिया. Right? So will this sentence be correct? क्या ये sentence correct हो गया? ऐसे ही लिखने पे एक present participle में होगा, second future में होगा. अच्छा, अगर आप ये बोल रहे हो उमेश वांखड़े, you have said एक present participle में होगा और दूसरा future tense में होगा. That means you want me to write this in present participle and this in what? This in future tense. Now let me tell you, present participle is ing form. ठीक है, ing form का यहाँ use नहीं होगा. Okay, you are saying, someone said that we'll remove the second one. Those of you who have learned कि second वाला हटा देना है, जिसने भी ये बोला है कि second वाला हटा देना है, ये काम नहीं करेंगे कभी. First वाला ऐसा करोगे, second वाला ऐसा करोगे. This is nothing to do with this sentence. What we do is the completion of the work. जो भी काम पहले complete हो जाएगा, that will be in present tense. जो बाद में complete होगा, वो future tense में होगा. ठीक है? For example, I will complete my work, you will come to my place. अब बताओ, इन दोनों में से कौन सा पहले होगा? What will be done formally? Will he come to his place or he will complete the work? Obviously, he'll come to the place first and then the work will be completed. So whatever is done on the first basis, that is written under present tense. तो जो भी काम पहले होगा, ये नहीं लिखना है कि पहले लिखा क्या है. जो काम पहले complete होगा, उसको present tense में रखेंगे. तो when you come. So what does the rule say? We will never use two future tense in a single sentence. Use present simple with the, which one? With the verb which completes at first and future with the other one. क्या मतलब हुआ सेंटेंस का? जब भी हमारे पास एक ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें क्या होगा, जिसमें हमारे पास ऐसा सेंटेंस दिया हो जिसमें दो फ्यूचर टेंस हो, तो दोनों फ्यूचर टेंस में से जो काम पहले ख़त्म होगा उस काम को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखोगे और दूसरे काम को आप फ्यूचर टेंस में ले जाओगे. जैसे कि हमने यहाँ पे किया है, यू विल कम टू माई प्लेस. जो तो पहले वो आएगा तब हम काम कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए हमने लिखा है व्हेन आई विल कंप्लीट माई वर्क यू कम टू माई प्लेस. ये करेक्ट सेंटेंस होगा. और इफ़ वी टेक द एग्जाम्पल, अगर हम पहले वाले एग्जाम्पल से ले लें, आई विल गिव यू अ गिफ्ट व्हेन आई कम बैक फ्रॉम द USA. क्विकली अगर हम यही सेंटेंस लिखते हैं तो ये करेक्ट होगा. I will give you a gift when I come back from the USA. यहाँ पे भी दो sentences है. I will give you a gift, I come back. If I say when I will come back, will this sentence be correct?
दिस विल बी इनकरेक्ट. क्यों? यहाँ दो काम हो रहे हैं, दोनों फ्यूचर में होने हैं, मेरे आने का भी और आपको गिफ्ट मिलने का भी. दोनों काम फ्यूचर में हो रहे हैं, लेकिन पहले कौन सा होएगा? Which one will be performed formally? Obviously, my arrival. That is why we will not write will with it. What is the correct sentence? I will give you a gift when I come back from the USA. So this was the end of present indefinite. Tomorrow or in the next session, we will start with the present continuous, present perfect and present perfect continuous. Thank you for joining me. I hope you enjoyed the video and I enjoyed your comments as well.